Good morning, students. Today we are going to start with a new chapter. Before that, I want to remind you all that your chapter number 6, that is institutions supporting the business. Okay, जो institution जो business को finance करते हैं, वैसे इंडिया में बहुत सारे financial institutions हैं. They support the business in India. Okay, those business who are running in India. So that chapter is for your self study. So the next chapter is business environment. Okay, now before we start with business environment chapter, let me introduce you what is actually business environment. Okay, so now you all know the meaning of the word environment. Environment is what? It is a surrounding where we are living. Okay, it will include people, it will include the transportation, the locality, the area where we are living, how is the environment, it is good, polluted. So there are different types of environment where we live. In the same way, where the business is operating, okay, जहाँ पे business operate होता है, जहाँ पे manufacturing unit है, जहाँ पे production unit है, वहाँ पे भी उनका एक environment रहता है. ऐसा कोई भी business नहीं है जो isolated place पे अपना working start करे. Okay, there is no place, क्योंकि every business to succeed, okay, it requires many things. Okay, जैसे कि उसको raw material की ज़रूरत रहती है. जो raw material तो खुद से अपने कंपनी में नहीं कर सकते. They have to come in contact with farmers or anyone who provides them the raw material. उसके बाद जो raw material है और जो प्रोडक्शन किया, तो प्रोडक्शन करने के लिए भी उनको लोगों की ज़रूरत रहती है. They require some people to start their business. Then they require some people who are working over there, who are managing their business. Okay, उसके बाद उनको ऐसे भी लोग लगते हैं जो ट्रांसपोर्ट कर सके from one place to another, to market their things. So there are n number of people who are required to start a business. So here any business जो भी है, they require a good background. Okay, a good business environment. So in this chapter you will be learning about introduction. In introduction you will learn about meaning and definition. उसके बाद आप देखोगे importance of business environment, dimensions of business environment, new economic policies and business, impact of new policy on business environment. Okay, now यहाँ पे now in this chapter also there is a reduction in this syllabus, that is new economic policy and business and impact of new economic policy on business environment. These two concept जो टू कॉन्सेप्ट या टॉपिक है, दिस इज़ नॉट देयर फॉर योर एग्ज़ाम. ओके, आपके एग्ज़ाम के लिए नहीं रहेंगे. दिस इज़ फॉर योर सेल्फ स्टडी. मतलब देयर विल बी ऑप्शन बेस्ड ऑन दिस, बट यू हैव टू डू इट ऑन योर ओन. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. Here as I told you, जो भी बिजनेस है उसको अगर सक्सेसफुल होना है, then he should come in contact with many people or he should come in the contact with the surrounding. So the business must continuously monitor and adapt to the environment in order to survive and prosper. Okay, if they want to survive, if they want to be successful, then they should adapt and adjust to the environment where they are operating. Okay, now ये जो बिजनेस है उनका सक्सेस किसके ऊपर है? how well they are able to adapt to the environment or how well they are able to adjust to the environment. Based on that their success will depend. Okay, ये लोग कैसे काम करते हैं, कैसे ऑपरेट होते हैं, so on that their business success will depend. So here the meaning of business environment is business environment comprises of such factors which can affect business. Okay, such as strength, weaknesses, internal power, relationship and orientation of the organization. Government policies and regulations, nature of the economy and economic conditions, socio-cultural factors, demographic trends, natural factors, global trend. These are some of the factors that are responsible for the business environment. So term business environment generally refers to the external environment which includes factors outside the business leading to the business opportunities and
एंड थ्रेट्स टू द बिजनेस। मतलब जो एनवायरनमेंट है, जैसे कि अगर बहुत सारे कंपटीटर्स हैं देन द बिजनेस विल हैव लॉट ऑफ problems, okay, that is competitive problem, or if there is monopoly then they have the monopoly problem. So ऐसे बहुत सारे problems रहते हैं. So it is like a threat and opportunity for a business. So where the business is operating, the environment in which the business is operating. So according to, there are some definitions which are given. According to Bayard of Wheeler, he says the total of all things external to the firm and industries which affect the organization and operation is called as business environment. Okay, then according to William F. Gulek, business environment is the process by which strategists monitor the economic environment, markets, suppliers, technological, geographical and social settings to determine the opportunities and threats to the business. Okay, so business environment is what it will constitute the threats to the firm and offer opportunities for potential market including several factors. Okay, so ये इट कैन बी अ थ्रेट, मतलब वो उनके लिए खतरा भी हो सकता है एंड इट कैन क्रिएट अपॉर्चुनिटीज ऑल्सो. सो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट? नाउ बिजनेस एनवायरनमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट विल हेल्प टू स्ट्रेंथन द बिजनेस firm by using its resources more effectively, to be more specific, proper understanding of various dimensions of the business environment help the business in following ways. Okay, the first one is determining opportunities and threats. Okay, now ये जो business है वो जब अपने environment, it comes when there is a interaction between business and environment, this identifies the opportunities and threats to the business. मतलब business को पता चलेगा कि उसकी opportunities क्या है and उसकी threat. It will help the business enterprise for overcoming challenge successfully. Okay, जो भी challenges है वो अच्छे से they can successfully face the challenges. Next is identify firm's strength and weaknesses. Now business environment, they can help to identify the individual strengths and weaknesses in the view of technological and global environment. Okay, so this is the second point why business environment is important. Third one is continuous learning. Now what happens when there is a good environment or when there is a better environment or whether there is a bad environment, what will happen? ये जो manager है he will continuously go on researching, एनालाइज करेगा कि क्या हमारे प्रॉब्लम्स है, क्या हमारे चैलेंजेस है, हमारा थ्रेट क्या क्या है, हमारे लिए क्या क्या खतरा है. सो दिस ऑल थिंग्स आर एनालाइज. सो व्हाट विल हैपन, द बिजनेस एनवायरमेंटल एनालिसिस जो भी करेंगे, ओके, दिस मेक्स द टास्क ऑफ द मैनेजर ईजियर इन डीलिंग विद द बिजनेस चैलेंजेस. ओके, the manager are motivated to continuously update their knowledge, understanding the skills to meet the predicted challenges. एक मिनट में. Now here the manager जो है they are motivated to continuously update their knowledge, understanding the skills to meet the predicted changes in realm of the business. Next is image building. Now environmental understanding helps the business organization in improving their images by showing their sensitivity to the environment within which they are working. ओके, तो यहाँ पे उनको क्या पता चलेगा, दे विल, जो भी एनवायरनमेंट है दिस विल हेल्प द गवर्नमेंट और एम्प्लॉयज़ टू फाइंड आउट हाउ दिस बिजनेस इज वर्किंग और हाउ दिस बिजनेस इज ऑपरेटिंग. सो हियर दे व्हेन दिस पीपल कम इन कॉन्टैक्ट, ओके, जब एनवायरनमेंट है तो वहाँ पे गवर्नमेंट होगा, यहाँ पे बिजनेस होगा, यहाँ पे अदर बिजनेसेस होंगे, कंज्यूमर्स होंगे, एम्प्लॉयज़ होंगे. सो दे विल बी एबल टू नो हाउ देयर बिजनेस इज. सो ये जो एनवायरनमेंट है दिस विल हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट इज meeting competitors. Okay, so here it helps the firm to analyze the strategies of the competitors. Okay, it will help the analyze the competitors and formulate their own strategies accordingly. Next is giving direction for growth.
द इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट, मतलब जब हम लोग एनवायरनमेंट, मतलब जब हम लोग एनवायरनमेंट, मतलब देयर विल बी गवर्नमेंट, देयर विल बी बिजनेस बैंक्स, देयर विल बी एम्प्लॉयज, देयर विल बी कंज्यूमर्स, सो वी विल कम टू नो हाउ व्हाट इज द कस्टमर्स वांट्स, वो एम्प्लॉयज़ के क्या क्या वांट्स है, उनके स्किल्स कैसे है, हाउ दे आर प्रोफेशनल्स एंड ऑल टैलेंट्स. Then when it is bank, we will be able to find out how much loan can we get, government, how much subsidies we can get. So when you come in the interaction with the environment, this leads to opening up of new frontiers of the growth to the business firm. It enables the business to identify the areas of growth and expansion of their activities. Okay, then next is dimensions of the business environment. Now this business environment जो है, they are divided into two. Okay, that is external and the internal environment. Now internal environment is what, which is inside the business. Okay, so this internal factors such as personal, physical, natural, okay, facilities, organization are some of the controllable factors. मतलब you can control, जब हमारा internal factors जो है they can be controlled by us. मतलब अगर हमारा जो personal problem है we can control it, employees के जो problem है we can handle it. But जो external factors जो है which are beyond the business environment, okay, which is outside the business, they are uncontrollable. Okay, if this happens then we cannot do anything. Those are natural, social, उसके बाद पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, टेक्नोलॉजिकल एंड लीगल. सो फर्स्ट वी विल सी द इंटरनल फैक्टर्स विच आर कंट्रोलेबल. ओके, नाउ दिस पॉलिसीज जो है, द पॉलिसीज आर डिसाइडेड बाय द शेयर होल्डर्स, मैनेजर्स, लेबर यूनियंस एंड द एम्प्लॉयज़ आर नोन एज इंटरनल फैक्टर्स. ओके, विच कैन बी कंट्रोल. ओके, हम लोग अच्छे से पॉलिसीज करके या कुछ भी करके वी कैन कंट्रोल दिस इंटरनल फैक्टर्स, बट एक्सटर्नल फैक्टर्स वी कैन नॉट. Now the first one is value system. The value system of the, मतलब ये जो है, it is the value system of the founder and those at the top management has important bearing on the choice of the business. Value system is important to success of the business. Okay, ये जो value system है, that is what this factor जो है value system, it will help, मतलब ये जो फैक्टर है इट विल हेल्प टू फाइंड आउट व्हाट आर द वैल्यूज वेयर वी कैन कंट्रोल दिस वैल्यूज. ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट इज विजन, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स. नाउ हमारा जो बिजनेस है, ओके, दे विल एम एट व्हाट, to find out what is their vision, what is their mission and what is their objective. So the business domain of the company, priorities, directions of the development, business philosophy, business policies are guided by the vision, mission and objectives of the business. Third one is management structure and nature. Now the composition of board of directors, extent of professionalism of management, etc. are the important factors that influence the business direction. Next is internal power relationship. Now the support of the top management to the different levels of the employers, shareholders, board of directors have an important influence on the decisions and their implementation. So the relation between the members and the board of directors and the chief executive is also a critical factor. Next is human resource. Human resource are what? Human resource are people who are working in that organization. So the characteristics of the human resources like skill, qualities, moral, commitment and attitude, etc. could contribute to the strength and weaknesses of the organization. Then there are other factors. Okay, other factors भी है that will influence the internal factors of the organization. That is physical assets and facilities. Now the production capacity, technology, efficient distribution, logistics, etc. are the factors which will influence the competitiveness. Next is marketing resources. Quality of marketing, brand equipment, distribution network, etc. have a direct effect on the business.
नेक्स्ट इज फाइनेंशियल फैक्टर्स. फाइनेंशियल मतलब मनी रिलेटेड फैक्टर्स जो है. ओके, दिस आर व्हाट फाइनेंशियल पॉलिसीज, फाइनेंशियल पोजीशन एंड स्ट्रक्चर्स ऑल्सो अफेक्ट बिजनेस परफॉर्मेंसेज, स्ट्रेटेजीज एंड डिसीजन. सो हियर देयर इज अ डायग्राम. दीज आर द एक्सटर्नल एंड द इंटरनल फैक्टर्स. देखो ये जो ग्रे में मार्क किया हुआ है ना, सी दिस इज आवर बिजनेस, द फर्म. तो उसके इंटरनल फैक्टर्स कौन से हैं? एम्प्लॉयज़ जो काम करते हैं वहाँ पे, मैनेजर, शेयर होल्डर्स, यूनियन. सो दीज आर इंटरनल फैक्टर्स विच वी कैन कंट्रोल. अगर एम्प्लॉयज़ को कुछ प्रॉब्लम है, मैनेजर्स का कुछ प्रॉब्लम है, शेयर होल्डर्स का, यूनियन का, देन वी कैन कंट्रोल बाय फुलफिलिंग देयर वांट्स. बट बिजनेस को अदर फैक्टर्स भी होते हैं, दोज आर द एक्सटर्नल फैक्टर्स. जैसे कि टेक्नोलॉजिकल चेंज हुए, देन वी कैन नॉट कंट्रोल इट, वी विल गो इन लॉस. Economic, political, social and legal, these are some of the external factors. Okay, so let's see the external factor. Now these external factors which will influence the business, geographical and ecological factors. मतलब अगर वेदर कंडीशन हो या क्लाइमेट कंडीशन हो, रिसोर्स जो है नेचुरल रिसोर्सेज, देन लोकेशन, दीज आर सम ऑफ द एक्सटर्नल. अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो गया, एनवायरनमेंट ना, नेचुरल एनवायरनमेंट कंप्राइज ऑफ व्हाट? क्लाइमेट. अगर अच्छा क्लाइमेट है तो अच्छे से फसल उगेगी, अदरवाइज देयर विल बी प्रॉब्लम. मतलब हर एक फैक्ट्री को, हर एक बिजनेस को क्लाइमेट का इम्पॉर्टेंट रहता है. इफ इन विच क्लाइमेट it is working. If it has to work in the cold climate, then the company should be situated in the cold area only, or they should make such a arrangement that it will create the coldness in that firm. Okay, so ऐसा भी रहता है. So they require, sometimes they require landforms, they require river, ocean, natural resources. So depends on the environment. Manufacturing is the other aspect of the business on which the physical environment are input, like raw material हो या skillful labor, water, fuel. These are the some of the factors which will influence the manufacturing unit. ट्रेड एंड कॉमर्स जो है दे आर डिपेंडेंट ऑन जोग्राफिकल फैक्टर्स. ओके, सो बहुत सारे फैक्टर्स है, जोग्राफिकल, नेचुरल, एग्रीकल्चरल, विच आर रिक्वायर फॉर द प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द बिजनेस फर्म. ओके, so here environmental pollution and distribution of ecological balance cause the great government policies aimed to preservation of environmental purity, ecological balance and conservation of non replenishable resources. मतलब अभी गवर्नमेंट ने ऐसे पॉलिसीज फ्रेम किए हैं which will save the environment. Okay, so that is also important. That is what natural environment. External factors के अंदर first one is natural environment, second one is social environment. Social is what? Here the business जो practice करता है. Okay, so it has to come in contact with large society और large social system. Okay, so यहाँ पे कौन कौन रहते हैं society? मतलब there will be customer, there will be people who are staying वहाँ पे रहते हो. So here there are features of the business, that class structure of the society which tells you about the social role and organization and development of the social institutions. Okay, जैसे कि ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल. अगर कंपनी डाल रहे हो तो उनका एम्प्लॉयमेंट देना है. अगर उनकी जगह गई है, देन दे हैव टू गिव एम्प्लॉयमेंट टू दोज पीपल. ओके, देन वहाँ पे जो एजुकेशन है, इनकम लेवल है, सोशल स्टेटस है, एटीट्यूड्स टूवर्ड्स द लिविंग, वर्क एंड सोशल रिलेशनशिप, ऑल विल कम अंडर व्हाट? सोशल एनवायरनमेंट. सो यहाँ पे जो फैक्टर्स है, दे आर व्हाट? द कस्टम्स, ट्रेडिशंस, वैल्यूज़, जो वैल्यू वहाँ पे यूज़ होते हैं, इथिक्स, बिलीव्स, सोशल ट्रेंड्स, पॉवर्टी, लिटरेसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट एंड other accepted behavior patterns are followed. So social aspect कौन से है? Important aspects of social environment are literacy level, educational system, cultural heritage, standard of living and mobility of labor.
सोशल ट्रेंड्स कौन से हैं नाउ, ये जो सोशल ट्रेंड्स है दे आर चेंजिंग वेरी फास्ट. ओके, ऐसा नहीं कि दे आर स्लो, बिकॉज ऑफ दिस यूज ऑफ इंटरनेट व्हाट इज हैपनिंग, पीपल आर चेंजिंग द सोशल एनवायरनमेंट वेरी इजीली. सो अर्बन पॉपुलेशन जो है इट इज़ बिकमिंग मोर हेल्थ एंड फिट कॉन्शियस. ओके, पीपल इन लार्ज नंबर आर गोइंग फॉर फास्ट फूड आइटम्स एंड जिम. In the view of this trends, fast food outlets and gyms are coming up in urban and semi-urban areas. So you all must have seen, okay, people are mostly using fast food, they are not preparing, actually they are using fast food, they are eating fast food. So you will see how fast food outlets at many places. Okay, third one is social values. Now these social values are based on the customs, ethics, beliefs which will help the demand, जो business जो बाहर के market में जो demand है it will be depending on what is the social value based on the customs का, कैसे customs follow करते हैं, ethics क्या है, beliefs क्या है. So as per this customer needs what will happen, the social value will be based. जैसे कि होम बजट सिस्टम विल नेवर एक्सेप्टेड इन द रूरल एरियाज ड्यू टू द कस्टम. होम बजट कहाँ पे होता है, ओनली इन अर्बन एरियाज दे हैव देयर बजट कि इतना इज द बजट, बट इफ यू गो इन रूरल एरियाज देयर इनकम इज वेरी लो, सो दे डोंट हैव अ पर्टिकुलर होम बजट काइंड ऑफ अ थिंग. ओके, नेक्स्ट इज tradition. So celebration of Diwali, Eid, Christmas and other festivals affects the business. Okay, if they have their local what you call local festival and all, then it will affect the business. It will be good or bad for a business also. Next is political environment. Now political environment मतलब क्या है ना, every firm has to pay taxes, they have to form policies, so they will affect by the government and its policies. So political factors decide the nature of the business program and project to be undertaken for the development of the country. Okay, now this will include what, stability, peace of the country, specific attitude of elected representatives. So here यहाँ पे पॉलिटिकल इंटरफियरेंस अगर होता है देन इट इज़ वेरी बैड फॉर अ बिजनेस ऑल्सो. सो इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री एज वी नो. सो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम कंप्राइजेस ऑफ वाइटल इंस्टीट्यूशंस लाइक लेजिस्लेचर, गवर्नमेंट एंड जुडिशरी. सो लेजिस्लेचर मतलब इट इज़ अ वेरी पावरफुल बिकॉज पावर्स सच एज पॉलिसी मेकिंग, लॉ मेकिंग, बजट अप्रूविंग, एग्जीक्यूटिव कंट्रोल आर सम इन द हैंड्स ऑफ द लेजिस्लेचर. सो इट लेजिस्लेचर अगर अच्छा है then it will be good for a business. Next is government. So here government क्यों, because it will because here there are some responsibilities towards the business. Government policies does not affect the business organization. So government should frame such formalities for the पॉलिसीज़ फॉर द बिजनेस. जो गवर्नमेंट जब पॉलिसीज़ फ्रेम करते हैं देन दे शुड कीप इन माइंड कि हम लोग जो पॉलिसी करेंगे इट विल नॉट अफेक्ट द बिजनेस. ओके, ऐसा डिसीजंस नहीं लेने चाहिए दैट विल कॉज लॉस फॉर अ बिजनेस, बिकॉज व्हाट हैपन्स इफ इट कॉजेज लॉस टू द बिजनेस देन कंट्रीज इनकम विल गेट डाउन. ओके, जीडीपी लेवल हो एंड जो नेट अर्निंग्स है वो कम हो जाएंगे. सो दे शुड टेक डिसीजंस प्रॉपरली. ओके, नेक्स्ट इज जुडिशरी. ना जुडिशरी इज अ थर्ड important institution in political system. Okay, now in this it determines the methods of working of the government and defines the relationship between government and its citizen. Next one is economic environment. Now economic is what, now here this will decide how the business will succeed and survive. Okay, so economic environment consists of economic condition, economic policies, economic system, basic economic philosophy, infrastructure, national income, money supply, saving stages in the economic development and trade cycle. Okay, so यहाँ पे economic conditions plays a very important role. अगर country की economic condition अच्छी है then this will be very good for a business. So economic condition of the nation refers to the present state of economy in the country or region. Economic conditions of the nation is based on the gross domestic product, per capita income, availability of the capital, growth of foreign trade and strength of the capital market.
गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसी मतलब ऑल बिजनेस एक्टिविटीज़ दैट आर डायरेक्टेड टू इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक पॉलिसी, मतलब दिस आर फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम ना। गवर्नमेंट क्या करते हैं, इट कीप्स ऑन चेंजिंग दिस पॉलिसीज फॉर द डेवलपमेंटल व्यू। ओके, जब जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा वैसे वैसे ये पॉलिसीज चेंज होती रहेगी। सो योर इंडस्ट्रियल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, so these are some of the policies which are adopted by the government to for the development of the economy. Okay, so and this ये जो policies है they should be strictly followed by the every organization. Next is economic system. Now the scope of private business and the extent of the government regulation of the country's activity will depend on the nature of economic system. कैसा economic system है, whether it is socialistic, whether it is capitalistic or whether it is mixed. So let's see what is capitalistic economy. Now in this economy, capitalistic economy, it is as a free market economy. Okay, now here this system stretches on individual which believes in private ownership, जैसे कि यूएसए में it is a having a capitalistic economy. Second one is socialistic economy. Now this economy ये in this economic system factors of production are organized, managed and owned by the government. Socialistic economy क्या होता है, यहाँ पे there involves मतलब equal division होता है on the existing wealth among the people. And third one is mixed economy. Mixed economy is operating in India. हमारे country में mixed economy है, where that is generally owned by the governments के भी institutions हैं and there are private institutions also. So here the production are jointly owned by the government and the private individual. ये हो गया economic environment. Next comes the technological environment, the kind of technology which is adopted by the organization for production. Okay, so it can be traditional, can be modern. So most of the technology ये जो है it was shaping the destiny of the people and the environment. So technical changes are fast. Okay, it changes and the business should be alert about the adoption of the technology from time to time. Okay, जैसे कि डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव by the government of India, पहले कैसा था, all the payment were done in cash, but now it is very easy to do the payment or whatever because it is digital sorry everything is digitalized over here. नेक्स्ट इज लीगल एनवायरनमेंट. नाउ बिजनेस जो है इट हैज़, ये जो बिजनेस है इट हैज़ टू स्टार्ट फ्रॉम द लॉ. ओके, लीगली इट शुड स्टार्ट. ओके, सो हियर इफ दे वांट टू स्टार्ट, इफ दे वांट टू रेगुलेट, इफ दे वांट टू कंट्रोल, इफ दे वांट टू एक्सपांड, दे हैव टू बी अंडर द लीगल फ्रेमवर्क ऑफ द कंट्री. सो इन कनेक्शन ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हैव अ सेपरेट सेट ऑफ लॉज एंड कंट्रोल एंड डायरेक्शन ऑफ द बिजनेस. सो ऑल बिजनेस मैनेजर्स शुड हैव द knowledge of what the law of taking of the while taking the decision. So there are many laws. So first one is Indian Contract Act 1872 2017. Then Workmen's Compensation Act 1923 now 2010. Okay, Industrial Dispute Act 1947, Standard of Weight and Measurement Act 1969, Consumer Protection Act 1986, Competition Act 2002. Okay, so here it is amended and proposement of the amendment. Okay, so these are some of the factors that will influence the business environment. Now this chapter, ये जो topic है, that is new economic policy and the impact of new economic policy on business. This is for your self study, so you have to do it on your own. Okay, so with this we complete the 7th chapter. In the next class we will start with the new chapter. So before I stop, आई वॉन्ट टू टेल यू ऑल कि आप लोग जो आपका नोटबुक है उसमें क्या करो, ऑन द लास्ट पेज वेयर द एक्सरसाइज स्टार्ट. नाउ हियर सी देयर विल बी एक्सरसाइज स्टार्टिंग विद द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस. ओके, यहाँ के ये सारे एक्सरसाइजेज जो है, इतने मैंने अब तक 7 चैप्टर्स पढ़ाए, तो पूरे 7 चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव्स आपको अपने नोटबुक में लिखने हैं. ऑब्जेक्टिव्स, देन क्वेश्चन आंसर. नाउ सी हियर, select the correct option and rewrite the sentence, match the pair, then
there is give one word phrase term for the following sentence, state true or false, complete the sentence, select the correct option. ओके ये और फिर यहाँ उसके बाद there is correct the underlined word and rewrite the following sentence, answer in one word, explain the following terms and concept, study the case and situation and express your opinion. Okay, then you have distinguish between answer in brief, justify the following statement and attempt the following and answer the following. तो ये क्वेश्चन आंसर्स आपको अपने बुक में लिखने हैं. Okay, ask you one day to submit your books. In the next class, we'll start with a new chapter. That is Introduction to Management.